योर्स P3। हेलो और आप सबका स्वागत है योर्स P3 के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड हमारे डियर पेन पैल सेगमेंट का हिस्सा है और आज हमारे बीच जेसिका कुमार आई है। वेलकम टू योर्स P3 जेसिका, ग्लैड टू हैव यू हियर। सो जेसिका, आप कैसे परिचित होना चाहेंगे? नमस्ते प्रार्थना, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे। हाँ, मेरा नाम जेसिका कुमार है और मैं बिहार में रहती हूँ और मैं तो कई 15 सालों से इंडिया में रह रही हूँ। बीच बीच में कुछ गैप भी हुआ था, लेकिन मैं पहली बार आई थी 2006 में। हरिद्वार में रहती थी इंटर्नशिप के लिए आईटी कंपनी में। मेरी कहानी थोड़ा सा ऐसी है तो कि बैक एंड फोर्थ होता है। मैं अमेरिका से हूँ लेकिन मैंने शादी किया था बिहार से एक्चुअली। मेरे हस्बैंड अभिषेक और मेरे 2 बच्चे हैं और हाँ, हम लोग बिहार में रहते हैं। ओह वाओ, कितना सुंदर परिवार है आपका। तो मेरा जन्म और परवरिश दोनों बिहार में हुआ है। मुझे बिहार से बहुत ही प्रेम है और सही में बिहार मेरे लिए घर है, despite my ancestral home being in another part of the country. In your case, आप दुनिया के दूसरे भाग में पले बड़े थे। So what were some of the biggest cultural shocks for you? किन चीज़ों को आपने अलग पाया और किन चीज़ों ने यहाँ पर आपको घर जैसा महसूस कराया? किन चीज़ों को मुझे अलग पाया? क्या क्या डिफरेंस लगा? कल्चरल शॉक्स। शुरुआत में एक्चुअली मेन जैसे सबको होता है, इंडिया में आए तो फिर इतने भीड़ रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, सड़क पे लोग चलते रहते हैं, कोई जगह खाली नहीं रहता, स्पेशली मेन सिटीज़ में। ऑब्वियसली वो तो मेरे लिए बहुत शॉक हुआ था, पर धीरे धीरे वो सब ऐसे वो एडजस्ट हो गए। मैं तो एडजस्ट हो गई थी उस टाइम और धीरे धीरे जैसे कितने साल हो गया, अभी तो 15 साल हो गया। कितना इतने साल होने के बाद फिर आई थिंक मुझे क्या क्या शॉक्स लगता है कभी कभी इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी जैसे women's oppression and patriarchy, कभी कभी ये आज तक मुझे बहुत शॉक लगता है कि oh my goodness, how some women are treated and how the inequalities that are there. सब देश में होता है, but इंडिया में it's quite pronounced in some ways. So इंडिया में ladies को भी बहुत freedom होते हैं, कुछ परिवारों में बहुत ज़्यादा ही आज़ादी है लेडीज़ के लिए, फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंस है, और कुछ फैमिलीज़ में एकदम पिंजरे में बांध के रखते हैं। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील। So sometimes that comes as a very big shock to me, and so that's something I struggle with at times. Yes. So moving on from talking about India as a whole, मैं बिहार के बारे में पूछना चाहूँगी आपसे। काफ़ी बार लोग बिहार को लेकर बहुत गलत फहमी पाले रहते हैं। भारत में ही लोग बिहारी शब्द को गवार के मतलब के साथ जोड़ देते हैं। उस कारण भी कई बार बिहारियों के प्रति लोग भेदभाव भी कर देते हैं। I've heard this from many people कि जब भी वो अपने फील्ड में अच्छा करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि वह बिहार से है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में कैसा रहा है? हाँ, this is a good point about बिहार। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि अरे अगर आप अच्छा करते हो तो आप बिहारी है क्या। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इतना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जैसे मैंने देखा, जैसे मेरे अनुभव हुआ बिहार में, एक्चुअली लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहते हैं। Of course, you know, I'm a foreigner, so people are treating me very nicely. But I'm telling you, in other parts of India, it's not always like that. So, जैसे मैं हरिद्वार में रही कई साल और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था वहाँ as a foreigner. So, बहुत लोग
harassment करते थे, eve teasing बहुत ज़्यादा होता था उस time, and I was doing everything right, like you know लोग blame करते हैं, अरे वो तो क्या करती है, वो foreigner है तो छोटा कपड़ा पहनती होगी, रात में घूमती होगी. I didn't do any of that, like कुछ नहीं, कुछ एकदम घर में रहती थी, एकदम ढीला लंबा सा कुर्ता पजामा सब पहनती थी, दुपट्टा लेके. I mean, I was like living very carefully, and I had a lot of harassment issues. So I think that compared to other parts of India, I've had a great experience in Bihar, the way I've been treated. एक बार में क्या हुआ, मैं स्कूटी चला रही थी रोड पे पटना में, और दिस वाज आई गेस कुछ तो 1 साल पहले शायद. तो मैं स्कूटी चला रही थी और अचानक एक लड़का चिल्लाने लगा साइड में, बीच में. वो साइड में चला रहा था, मैं बीच में चला रही थी, और बोला कुछ तो बोल रहा था, और मुझे अंदर से लगा कि अरे ये लड़का तो कुछ बदमाशी कर रहा है, ये तो बदमाशी ही कर रहा है. सो आई लुक्ड ओवर, साइड में देखा क्या बोल रहा है. फिर वो बोल रहा था कि मैडम मैडम आपका स्टैंड गिरा हुआ है. तो वो एक्चुअली वो मुझे हेल्प कर रहा था. And I thought that he was about to say something like, hey, you know, trying to get my attention and say something crude, but actually wo help kar raha tha. So that's an example of, you know, people have these ideas and these defensive feelings, and actually it's not always accurate. I mean, we have to move. Of course, there are many Bihari people who are achieving great things, and people see that, but they think, oh, that's just an exception. Just like everywhere else, there are difficulties, there are challenges, but some people, you know, rise above. But I would say that we have to see what are the good things in Bihar as well. There are so many good things. And I made a reel on my Instagram lately, on my Invisible India Instagram. You can check that. And it was, why do I like to live in Bihar? And this, you wouldn't believe the kind of comments I got. बहुत ज़्यादा ही comment आया उसमें कि आधा ही negative था. Like I had listed out why I like to live in Bihar, and I had listed the, you know, respectful people, which I do find to be true. At least in my circumstance, I've found people to be. In of course, in some ways, people can be brash, but in some ways, people can be very respectful. I put about the linguistic paradise. I mean, I think this is an incredible, Bihar is an incredible place to learn about the languages of India. We have so many incredible languages in Bihar, and people just think, oh, हाँ, Bihari Hindi है और भोजपुरी. ये तो नहीं है, मतलब है, लेकिन बहुत सारे भाषा हैं. मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बहुत कुछ है. और people try to label, you know, Biharis as having improper Hindi, but actually these are just influenced by other languages. So I think that people need to drop the stereotypes and you know, actually start to see what's really happening here. I fully agree with you. And so my next question deals with the issue of development. Though I'm inept to deal with this topic, it is an important one to address. आज से लगभग 20 साल पहले भारत भर के लोग बिहार आने से डरते थे. बिहार में जंगल राज है बोल के सेइंग फेमस था. काफ़ी बदलाव आ चुके हैं आज के समय में, पर लोगों का बिहार के प्रति सोच वही रह गया है. Would you like to address this? Yeah, about the jungle raj. क्या करें? अभी तो जंगल राज का कुछ effects चल रहा है, जैसे corruption. I think that's the main one. I also don't feel apt or capable of dealing with the topic in its full weight, but I'll do my best. I think that, yes, we do have some effects of Jungle Raj continuing. I think we need to, I don't know how, you know, corruption is finally gonna get done. I think people, you know, there's corruption everywhere, but especially I do see it quite distinctly in Bihar, and I think that we have you know, local leaders are going to have to address this on a grassroots level and at a high level as well. So I think Bihar में बहुत बदलाव आ रहे हैं, but I also think that
the more power and the more money that's coming in, the more development that's happening, also some of that is getting into the wrong hands and people are using it for their own benefit rather than the benefit of society. So जो कुछ नेता आते हैं पर ये लोग अपना जेब भरने के लिए कर रहे हैं, ये लोग गरीबों की मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं. तो that's one of the struggles and one of the challenges that I do see is that I don't know how we're going to fix, how this is going to be resolved. But I do see that. As far as the safety and whatnot, I think it's a lot better than people think. Of course, you do have to, do things in a very different way. You can't just expect things to always go well. And of course, the justice system, may fail you. So I think sometimes, rule of law is not there as much as we need it to be. So, in other countries, and I'm not going to compare India to the US because that's not it's a very, very different place and it's different setup and different circumstances. So, but it is a very different feeling to be in a country where that if something bad happens to you, most of the time, that justice will be served or that the case will go, on. We have injustices everywhere, but I think that, this is a thing that we have to really focus on in India is getting, the corruption on an individual basis. We need to, try to stop it. And then, I don't know, I feel like, this is something only God can help change people's hearts and we can bring societal change on a mass level. Amen, amen. So, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बिहार की संस्कृति में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे बिहारी संस्कृति में क्या पसंद आता है? I would say that मुझे यहाँ के जो क्या बोलते हैं फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है. जैसे लोग एक दूसरे को ध्यान देते हैं, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं. I think this is opposite of the culture that I grew up in, where people feel very obligated towards their family, and that can be a good thing and a bad thing. But in the U.S., we have this toxic individualism, and it's actually very terrible. People think, oh, I want the independence, I want this, I want that. If you lived in that, many people come to the US and they hate it here. Like if they come from India and they're like, I hate this place. This is so lonely. Nobody cares about you. लोग आपका एक बार भी सोचते भी नहीं, कोई घर पे बुलाते ही नहीं. And that is very true. And in Bihar, I feel like there's so many of those traditional values that are still in place of thinking about your neighbors, thinking about other people, thinking about who is nearby you and what do they need and how can you help them, and of course what are people log kya kahenge, right? That's wo to bahut badi cheez hai. And I think that that's bad, but I also think it can be good in some ways that it keeps things in society log kya kahenge, but also you're thinking about other people as well, and that's something that we've completely lost at least in America. I would say we're so individualistic that it's actually poison to us. So मुझे ये बहुत पसंद है बिहार में. इंडिया में of course all over है, लेकिन बिहार में खासकर है और मुझे ये बहुत पसंद है. तो as a बिहारी बहू इस चीज़ को देख के मेरा लाइफ चल रहा है. I had to learn that, thinking about if I do something, it's going to affect my in-laws or my husband and their reputation and whatnot. So not because, I'm their property. It's not like that at all. It's like because I'm connected with them in some way. So I think that's the driving factor, and one thing I really like. Of course, ये तो सांस्कृतिक बात नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है. बिहार में फल इतना मीठा होता है और दूसरे जगह में इतना स्वादिष्ट नहीं होते हैं. बिहार के आम, बिहार के लीची, बिहार के केले
बहुत अच्छे होते हैं. So of course that's something I always miss anytime I'm outside of Bihar is यहाँ का फल इतना अच्छा होता है. Oh my goodness, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ. So thank you, Pratna. Thank you so much, Jessica, for giving us your time. It was truly wonderful to hear about your experiences and opinions. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट पे, and I hope that a lot of people enjoy this. If you want to connect with me, you can connect on Invisible India podcast. वो है that's about stereotype breaking desis. I also share about my life in India and in Bihar and cross-cultural relationships, of course, being married to an Indian, having kids. And one thing I'm focusing on in 2022 is Hindi learning resources and resources for people who want to come to India, who might have interest but don't know where to start. That's one of the things I'm going to be focusing. But yeah, I'm on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and of course my website, invisibleindiapodcast.com, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, JioSaavn, and Ghana. I can be found everywhere. Thanks, Pratna. Dhanyawad. Thank you again, Jessica. So be sure to check out Jessica's podcast, the Invisible India podcast. Thank you everyone for tuning in. See you in the next episode. Bye.